Welcome everyone. How are you all? Yes बेटा, मेरी आवाज सही आ रही है? Let me know बेटा. Am I audible to all of you? Abdul Sattar says yes sir. Okay बेटा. Omar Marazak says yes. Okay. Okay बेटा बताइए. Let's wait for a few minutes that other students can also join. Okay Naran Sagar बेटा. Okay, before we should start our class, I want to ask some of the students that what do you remember about classics and drama? We discussed in detail that what actually history of drama is. If anyone from you want to talk about the history of drama, then raise your hand, beta. Simply, you have to raise your hand. I will unmute you. Let's see who's going to talk about the history of drama. Whatever you remember, you just need to give us a brainstorming. Yes. Is there anyone? Yes, beta. Who's going to talk about history of drama? Anyone? Kuratulan. Okay, beta. Yes, beta. Unmute yourself. Assalamu alaikum, sir. Islam, beta. Sir, I'm just gonna give the brief history, right? So basically, the history of drama began when the settlers from German regions of Angles and Saxonies, and what was the third one, Jutes, when they settled in Britain after the downfall of Roman Empire, approximately close to 410 AD at that time. Okay. What happened there? Sir, they settled there na, in Celtic when they attacked the Celtic. So what was the condition of drama, beta? Drama was Sir, present at there? that time, the dramas were told in oral form. Okay. From generation to generation, in every feast and in every event, the dramas were told in oral form. Okay. Sure, After that, after that, in the time of, I guess, morality plays, then the drama turned into be performed physically in the church, and after that in the streets. Okay. Yeah, that's all. Yes, beta. Good try. I've known, so yeah. Beta. Is Thank there you. anyone? Is there beta anyone who want to discuss the transformation of drama in the history of English literature? Because if you remember, I had discussed kind of three transformation, that there were the transformation in drama time to time, like what kind of dramas were there during the time of pre-Anglo-Saxon period, and then little bit transformation took place, and then during the Anglo-Saxon period, what kind of dramas were there. Then after the Anglo-Saxon period, there was the Anglo-Norman period and the Middle English as well. So what kind of dramas were there during this time? So if you remember, I had discussed such kind of transformation of dramas. So if anyone from you want to discuss that kind of transformation, or you remember anything related to that transformation, then raise your hand. Actually, I just want you to speak up, to say something, to recall your learning which you
which had take place during last time? Anyone else? Okay, see, beta, if let me give you a brainstorming regarding the history of English drama. You see, if you remember, we had discussed that during the times of pre-Anglo-Saxon period, and it was also known as the time of Celtic people, and there were the dramas, like the dramas were being told through the oral stories, as Kuratulan mentioned. So, but here you have to keep one thing in your mind, that those oral stories were being told from generations to generations only. Suppose the elder family members used to tell to the youngers, to the children. In this way, the dramas or the stories were being told from one generation to another generation. But after the pre-Anglo-Saxon period, then the Anglo-Saxon period took place. So during the Anglo-Saxon period, little bit transformation took place, and here they started street performances as well. And in those street performances, sorry, not street performances, but before street performances, there were the oral stories which used to be told in their feast, in their marriage ceremonies, and whatever the events, the major events were being happening over there. So stories were being told in those events. Even suppose the one person used to stand on the table, on the chair, or anything which is on kept on high place. So he used to stand, or she used to stand, and all the people used to gather around that person, and he used to tell the stories. In this way, the little transformation took place. Then another transformation came in terms of street performances. Beta, if you remember, I had told you that a street performance took place, but that street performance was silent in nature. That means they used to perform through the gestures, and through the body language, and through the facial expressions. And after the time, another transformation took place, which was the silent drama, or sorry, the drama through the waving pictures. The one person used to carry a picture, and through the picture the message was being conveyed to the audience. And audience, that kind of audience used to gather in the streets and in the hall, or in the ground, or see, in this way they used to perform. And later the miracle plays, morality plays, these were three kinds of plays. They also took place during the Middle English period. So this is the transformation of English drama. Sorry, this is the transformation of drama in the history of English literature. So it was a little bit overview about the history of drama. Now let me share my screen. And Beta, if you remember, I had also discussed the concept of prior understanding of Oedipus Rex as well. If anyone from you wants to discuss or want to say something about the Oedipus Rex, then you have to raise your hand. हाँ, कौन कोई है मर्द मुजाहिद जो ऑडिपस रेक्स के बारे में कुछ बात करना चाहता है? Anyone wants to talk about Oedipus Rex? क्या Oedipus Rex का क्या सीन है, उसमें क्या हुआ था? If you remember, I had given you prior understanding of the Oedipus Rex. उसकी जो prior understanding है वो मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझाई थी. Let me open my slides. Oedipus Rex. Yes, here it is. अच्छा, कोई नहीं है लगता है, कुछ याद नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स को. Okay. There were three transformations. No, there was a ruler who got married with his mother. See, it was it was Oedipus. Manu says he kills his own father and married to his own mother. Yes, beta. Momna says you told us about a story of Oedipus. Beta, I did not tell you the story, but actually I told you prior understanding. इसकी जो summary है वो मैंने आपसे share नहीं की थी. मैंने बस prior understanding बताई थी कि prior understanding Oedipus Rex की गया है.
Yes, prophecy was there. Yes, Momna beta, prophecy was there. So last time, let me go back to my previous slide. Prior understanding of Oedipus Rex is prior understanding में क्या होता है कि when the Oedipus was born, then his father King Louis went to the oracle, or we can say that to the prophet who used to give prophecies or who used to give prediction. So he went to him and asked him the future, about the future. Then that oracle told him to that oracle told to the king Louis that your son Oedipus, when he will grow up, he will kill you and he will marry to your queen. That means he will kill you and he will marry to his own mother. So in order to avoid this prophecy, to avoid this fate, King Louis ordered his wife and his servant to kill the child. They both took the child to the forest, and there they handed over that child to a shepherd and asked him to carry this child miles away from this kingdom, so that the fate would not come true, and we can avoid the fate and the child can also live. So in due to that reason, they just did this act. Okay, but when the Oedipus grew up in another kingdom, that was the kingdom of the base, I guess. Let me, okay, see beta, whoever has done this or mark the screen, आई विल लेट यू नो आफ्टर द क्लास। चूंकि मेरे पास ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है और जिसने भी ये यहाँ पर लकीर खींची है, तो इंडीड आई विल हैव हिज नेम, आई विल हैव हर नेम। सो यू सी, आई एम नॉट लाइक अदर टीचर्स, मैं दूसरे टीचर्स की तरह नहीं हूँ कि इस चीज़ों को मैं इग्नोर कर दूँ। And whoever will show destructive behavior to me, that student will be dealt with iron hand, because मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, एंड बीइंग ए स्टूडेंट आपको भी पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और ऐसी चीज़ों पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। डोंट डू दिस टू मी, ओके, अदरवाइज इसका जो नुकसान होगा वो उसका आपको खुद फेस करना पड़ेगा। एंड मुझे पता चल जाएगा, डोंट वरी। अभी चूंकि मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को इन कर रहा था, जब भी मैं यहाँ पर नेम उसका नहीं देख पाया कि लाइन किसने ड्रॉ की है, लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डिंग देखकर मैं आपको बता दूंगा कि लाइन किसने ड्रॉ की है। ओके बेटा, सो डोंट डू सच काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग्स विद मी, अदरवाइज यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लॉस। और बाद में आपको जिसको बोलना है जाके बोल दीजिए। मेरे साथ ऐसा किसी ने भी किया ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, इफ यू गो विद इन अ फ्रेंडली वे, आई विल गो विद यू इन अ फ्रेंडली वे। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो मुझे पता है कि मुझे कैसे डील करना है, सो डोंट वरी। सो सी बेटा, जो इसका जो मैसेंजर था उसने एक और किंगडम में इसको ले गया आर्डिपस को, और वहां जाके उसने एक और जो किंग था उसको ये बच्चा अडॉप्ट करने के लिए दे दिया। ही ग्रू अप देयर, देन वहां से ऑडिपस बड़ा हुआ तो वहां के जो ओरेकल थे तो ये वहां उसके पास चला गया, उसके पास गया अपने फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए कि मेरा फ्यूचर कैसा है। तो वहां का जो किंग था उसने भी ऑडिपस को यही कहा, सॉरी किंग नहीं बल्कि जो ओरेकल था, जो प्रोफेट था, उसने कहा कि यू विल किल इवेंचुअली अननोइंगली, यू विल किल योर फादर एंड विल मैरी टू योर मदर। तो इसने कहा कि इस फेट को अवॉइड करने के लिए मुझे जाना चाहिए, ये अपनी किंगडम छोड़ के कहीं दूर चला चला जाना चाहिए। क्या पता मेरे ऊपर कोई ऐसी सरतारी हो जाएगी जिसकी वजह से मैं कोई हरकत करूंगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस ही वेंट अवे, वहां से चला गया, और इवेंचुअली वो कहाँ आ गया, जिसके उसके अपने बायोलॉजिकल मदर एंड फादर थे जो गास्टा एंड लोइस थे, तो उनकी किंगडम में आ गया, और वहां उसने रोड पर अपने फादर को अननोइंगली किल कर दिया। किंग से वहां पर इसका थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ एंड देन ही किल्ड हिम। तो और देन वहां पर जो फिनिक्स थी उसकी जो कर्स थी उसके जो उसने रिडल्स को सॉल्व किया, एंड देन ही गॉट मैरिड टू द जोकास्टा व्हिच हु वाज हिज ओन बायोलॉजिकल मदर। सो दिस वाज द प्रायर अंडरस्टैंडिंग बेटा। So it was a prior understanding of this class beta. So I hope it will help you to understand the summary. Now let's move forward to the summary. अब इसकी जो summary है वो मैं आपको बता रहा हूँ। As the play opens, जब इसका ओरिजिनल जो टेक्स्ट है आप उसको पढ़ेंगे, when you will go through from the original text beta, as the play opens, a priest
वो एक जो प्रीस्ट होता है और वो वहां पर जो दीवान होता है वहां पर खड़ा होता है। एल्डर्स जितने भी होते हैं उसके, दैट मीन्स के प्रीस्ट और जो भी दूसरे एल्डर्स होते हैं वहां के, वो सारे खड़े होते हैं। दे वर कॉलिंग टू द ऑडिपस किंग। अब इसका सिनेरियो इस तरह से है कि जो ऑडिपस की जो महल था, जो उसका रिहाइश का था, उसके सामने एक बड़ा हॉल होता था, वहां पर लोग जमा होते थे। देन वहां ऊपर से ऑडिपस आके जो किंग होता था, कोई भी किंग होता था वहां पर ऊपर आता था, वो आके उनके मसले मसाइल सुनता था और उनसे बात करता था। तो वहां से लोग उसको बुला रहे थे, ऑडिपस के नाम से उसको बुला रहे थे कि आप आ जाएं और हमारे मसले सुने। तो एड देम विद द प्लेग व्हिच हैज बीन सेंट बाय अपोलो टू रिवेंज द सिटी। अब यहाँ पर क्या था कि अपोलो जो था उसके पास से एक इनको मैसेंजर आया था कि जो इस किंगडम का जो पहला जो किंग था, द किंग लुइस, कि उसका उसका जो रिवेंज है ना, वो आप लोगों ने लेना है, और उसका जो किलर है उसको आपने अभी तक कोई सजा नहीं दी है। तो इसकी वजह से सिटी के ऊपर एक कर्स आ चुकी है, और अब वो कर्स तब खत्म होगी जब आप उस किलर को पकड़ेंगे और उसको अपने कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। सो इट वाज द स्टार्टिंग सीन। ऑडिपस आल्सो समन्स द ब्लाइंड प्रॉफिट। उसके बाद क्या होता है कि ऑडिपस ने अपना जो ब्रदर इन लॉ था, हिज नेम वाज कैरोन, सो ही आल्सो सेंट कैरोन। So Caron was sent to the oracle as well in order to consult that what to do or what not to do. And when the Caron left and he came also again, came back, then he also told Oedipus that oracle said that if the killer or the murderer of King Louis will be brought to justice, then the curse from the city will be left and everybody would be happy. So in this way, दे हैव टू फाइंड आउट द मर्डरर। अब जब आपको बैकग्राउंड का बेटा पता है, प्रायर अंडरस्टैंडिंग में हमने पढ़ा है कि किंग लुइस को ऑडिपस ने खुद मारा होता है, लेकिन ऑडिपस को ये पता नहीं होता है कि वो किंग था और उसने उसको जंगल में उसको मारा था। ही नेवर न्यू दैट, और इसीलिए इसको भी कुछ पता नहीं था। तो वो एक जो प्रॉफिट आया, उस हु क्लेम्स टू नो द आंसर्स टू द ऑडिपस क्वेश्चंस। जो ऑडिपस लोगों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि हाउ द किंग वाज किल्ड, because there was a rumors that the king was going to meet the oracle over the hills, over the top of the hill, क्योंकि top of the hill पे वो जो oracle होता था वो रहता था। So the king was going to meet him for consulting over some important matters. So वहां पर रोड पे ऑडिपस उसको मिलता है और देन उनको वो मार देता है, उसके गार्ड्स को भी मारता है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि वहां पर कुछ डाकू थे, लुटेरे थे, जो कि किंग को उन्होंने और उसके जो वो थे सोल्जर्स थे उनको उन्होंने मारा है। तो देयर वर सो मेनी रूमर्स। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द मर्डरर, उस मर्डरर को फाइंड करने के लिए ही वाज इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम पीपल। ओके बेटा। सो बट जो दिस ब्लाइंड प्रॉफिट, ये जो ब्लाइंड प्रॉफिट था, and he was the oracle, so he claimed that I have the answers of every question which are being asked by Oedipus, but he refuses to speak। but उसने कहा कि मैं ये बताऊंगा नहीं, because those answers have a bitter truths or bitter reality, so that's why I'm unable to speak them up। uh, uh, when the truth brings nothing but pain, that prophet, old prophet, blind prophet also said that if I will tell you those truths, then that truth will bring nothing but only pain, despair, and suffering. So that's why I'm not going to utter a single word. I'm not going to speak about those. So he advises Oedipus to abandon his wish to talking to him। दैट्स वाई उसने अपने आर्टिपस को ये कहा कि आप मुझसे बात करने या मुझसे ये जो सवाल पूछ रहे हैं या जो जिनके सवालों के जो जवाब पूछने चाह रहे हैं, आप उस अपने विश को अबंडन करें, उसको छोड़ दें और मुझसे आप इस तरह के कोई सवाल ना पूछें। ऑडिपस डिमांड्स दैट कैरोन बी एक्सिक्यूटेड। उसके बाद ये जो ऑडिपस होता है उसको लगता है कि ये जो उसका ब्रदर इन लॉ कैरोन है, ही इज डूइंग समथिंग अगेंस्ट him and against his kingdom। Actually, he thought that Charon wants to be king,
कैरोन किंग होना चाहता है. सो दैट्स व्हाई ही इज डूइंग such kind of things, and he's doing against his he's doing some acts which are against his kingdom. तो इसीलिए उसने ये कहा कि इसको एग्जीक्यूट कर दें. कन्विंस दैट ही इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट हिम. उसको ये भी लगा कि वो उसके और उसकी किंगडम के खिलाफ कंस्पायर कर रहा है. तो ऑडिपस वाइफ जोकास्टा टेल्स हिम ही शुड टेक नो नोटिस ऑफ प्रॉफिट्स. तो यहीं पे ऑडिपस की जो वाइफ होती है जोकास्टा, जो कि उसकी बायोलॉजिकल मदर भी होती है, शी टेल्स हिम कि ये जो ब्लाइंड प्रॉफिट है, आप इसकी बातों का कोई नोटिस नहीं लें. आज से बहुत टाइम पहले इन्होंने एक प्रोफेसी दी थी कि लुइस का बेटा होगा और वो लुइस को मारेगा, किंग लुइस को मारेगा और वो मुझसे शादी करेगा. तो आ, जो किंग लुइस है वो तो एक्चुअली रोड पे, क्रॉस रोड पे उसको तो ही इज किल्ड बाय द रॉबर्स, ही इज किल्ड बाय द पीपल हु वर ट्राइंग टू रॉब हिम. सो दैट्स व्हाई दैट मींस their prophecy was not correct at all. तो यहाँ पे किल्क होता है ऑडिपस के माइंड में. देन ही स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम द पीपल दैट हाउ द किंग लुइस वाज किल्ड एंड वेयर ही वाज किल्ड. तो वहां पता लगा कि वहां 3 रोड एक साथ मिल रहे थे जंगल में किसी जगह पर, एंड देयर द किंग वाज किल्ड. देन जब उसको 3 रोड्स का बताया जाता है ऑडिपस को, देन ही केम टू नो दैट यस, इसको जहन में लगता है कि हाँ, मैं जब आ रहा था यहाँ पर दी बेस में, जब मैं आ रहा था तो 3 रोड एक साथ मिल रहे थे और वहां पर एक बंदे के साथ मेरा आर्ग्यू हुआ था. देन आई किल्ड हिम, और मैंने उसके जो गार्ड्स थे मैंने उनको भी मार दिया था. सो यू सी, यहाँ से उसको एक माइंड में क्लिक होता है कि आई नो अबाउट दिस इवेंट. देन उसके बाद उस केस को फर्दर ये इन्वेस्टिगेट करता है कि आगे हुआ क्या और कैसे हुआ. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. The mention of crossroads causes Oedipus to give pause and have suddenly become worried. और जैसे ही उसको क्रॉस रोड्स, वो जो 3 क्रॉस रोड्स से एक साथ मिल रहे थे वहां पर इसको पता लगता है, तो वो थोड़ा धीमा हो जाता है और इसको ये पता लगता है कि ये जो और ब्लाइंड प्रॉफिट जो बता रहा है इसको, जहाँ जो इसको इसके ऊपर डाउट्स हैं कि यू आर इन्वॉल्व इन द मर्डर ऑफ किंग लुइस. सो these are the accusations which were attempted by this old man और ब्लाइंड प्रॉफिट. उसने ये एक्यूजेशन लगाए थे इसके ऊपर, किंग ऑडिपस के ऊपर. सो अब उसमें भी उसको थोड़ी रियलिटी लग रही थी कि हाँ, कहीं ये रियलिटी तो नहीं है, क्योंकि क्रॉस रोड पर तो मैंने ही एक बंदे को मारा था, वो बड़ा वेल्दी भी लग रहा था और उसके साथ गार्ड्स भी थे. सो व्हेन अ मैसेंजर फ्रॉम कोरिन्थ अराइव्स विद द न्यूज ऑफ डेथ ऑफ किंग पॉलीबस. अब ये जो बेटा किंग पॉलीबस है, आपको याद होगा, ये इसका वो एडॉप्टेड फादर है जिसने अपने फादर को एडॉप्ट किया था. तो आता है कि आपका जो फादर है किंग पॉलीबस, उसकी डेथ हो गई है, और उसकी डेथ का रीजन ये है कि वो बीमार थे. तो उसकी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई. ऑडिपस शॉक्स एवरीवन विथ हिज अपरेंट हैप्पीनेस. ऑडिपस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है. वो इसलिए खुश हो जाता है क्योंकि उसको पहले डाउट था कि कहीं किंग लुइस को इसने तो नहीं मारा है. तो अब और इसको ये भी डाउट था कि कहीं मैं ही तो किंग लुइस का बेटा नहीं हूँ. तो मेरा जो फादर था वो तो किंग पॉलीबस था और वो तो अपनी बायोलॉजिकल डेथ से मरा है, सॉरी अपनी जो नेचुरल डेथ से मरा है, तो उसमें तो उसकी डेथ में तो मेरा कोई किरदार ही नहीं है. तो जाता है एंड ही सीज हिज दिस एज अ प्रूफ, और ये उसको एक प्रूफ मिल गया कि इसने कोई ऐसा काम गलत नहीं किया, दैट ही कैन नेवर किल हिज फादर, कि उसने कभी अपने फादर को मारा नहीं है. अल्दो ही स्टिल फियर्स, बट उसके दिल में कुछ और भी शुबात जरूर थे, डर था, दैट ही मे समहाउ कमिट इंसेस्ट विद हिज मदर, कि वो प्रोफेसी का जो दूसरा, ये जो ब्लाइंड प्रॉफिट था वो उसको जब कुछ भी बता नहीं रहा था बेटा, तो ही थ्रेटन दैट ब्लाइंड प्रॉफिट, उसको कहा कि अगर आप नहीं बताओगे तो आई विल किल यू. तो उसने जितनी भी सच्चाई थी, जो भी प्रोफेसी थी, वो ऑडिपस को बता दी थी, और ऑडिपस को ये भी बताया कि जो क्रॉस रोड पे जो किंग लुइस का मर्डर हुआ है, इट वाज यू हु किल्ड द किंग लुइस. एंड प्रॉफिट ने उसको ये भी बताया कि आई फियर, मुझे डर है कि यू आर द सन ऑफ किंग लुइस एज वेल, तो और एंड यू किल्ड योर फादर. तो इस तरह से उसको ये लगा. तो जब उसको ये पता लगा कि इसका जो फादर था पॉलीबस, वो नेचुरल डेथ की वजह से
तो ही बिकेम हैप्पी कि हाँ मैंने अपने फादर को खुद से नहीं मारा है। तो यहाँ पर ये सीन था बेटा। आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद द मैसेंजर ईजर्स टू ईज ऑडिपस माइंड टेल्स हिम नॉट टू वरी। मैसेंजर ने, जो मैसेंजर आया था पोलिबस की डेथ का न्यूज लेकर, उसने ऑडिपस को ये बताया कि आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप किंग ओलिपस के सगे बेटे नहीं है। यू आर एडॉप्टेड सन ऑफ किंग पोलिबस। आप उनके एडॉप्टेड सन हैं, तो देयर इज नो नीड टू बी वरीड। द मैसेंजर टर्न्स आउट टू बी अ वेरी शेफर्ड। ये मैसेंजर वही शेफर्ड था जिसको जोकास्टा और उसके सर्वेंट ने किंग आर्टिपस को दिया था बचपन में कि आप इसको दूर ले जाइए। वही मैसेंजर था, और ये वहां से वापसी आया था और आके आर्टिपस को बता रहा था। Child when he later took to the coronet and gave up to the king Polybus for adoption। तो इसने ये पूरा मैसेंजर ने किस्सा बताया कि किस तरह से आपको मैं वहां पर जाके ले गया था और जाके मैंने वहां दिया था। तो यहाँ से दोबारा जो आर्टिकल्स था उसके माइंड में बहुत ज़्यादा फियर एंड इस तरह की फीलिंग्स आ गई कि मैं तो उनका एडॉप्टेड सन था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किंग लुइस को मैंने ही, जो मेरा फादर था उसको मैंने ही तो नहीं मारा। तो अगेन ही स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, और इसकी जो मैसेंजर की बातें थी उनके ऊपर भी इसको ट्रस्ट नहीं था, उनके ऊपर वो कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था। ऑडिपस प्रेसेस द शेफर्ड, उसको बहुत ज़्यादा थ्रेटन किया, उसको टॉर्चर किया और एग्जीक्यूशन, टॉर्चर और एग्जीक्यूशन की भी थ्रेट्स दिए। तो उसने फाइनली जितनी भी थी सच्चाई वो सारी बता दी कि आप किंग लुइस के बेटे हैं। तो अब यहाँ ये क्लियर हो गया प्ले के अंदर कि जो ऑडिपस है बेटा वो किंग लुइस का ही बेटा है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया ऑडिपस को। अब ये इसको कंफर्म करना था कि किंग लुइस का मर्डर कैसे हुआ था, कहीं वो मैं तो नहीं हूँ कि उसको मैंने मर्डर कर दिया हो। यहाँ पर अब एंड दैट जोकास्टा हैड गिवन द बेबी टू द शेफर्ड सीक्रेटली, ये पूरी स्टोरी उसने उसको बता दी। ठीक है बेटा। सो अब अ सर्वेंट एंटर्स एंड एक्सप्लेन द जोकास्टा। अब जैसे ही वो जो शेफर्ड होता है उसको जोकास्टा भी जानती है और उसने सारी स्टोरी बताई। तो जो जोकास्टा थी, शी वेंट her room and she was again and again asking Oedipus to not investigate, कि अब इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर। Serventus and explains that Jocasta, and she had begun to suspect the truth, had run to the palace bedroom and hanged herself there। अब चूंकि जोकास्टा उस मैसेंजर को पहचानती थी, शेफर्ड को पहचानती थी, सारी सच्चाई उसके सामने आ गई, तो शी वेंट टू हर ओन रूम, वो अपने रूम में अंदर चली गई एंड शी हैंग्ड हरसेल्फ, और उसने खुदकुशी कर ली। उसके सामने सारी सच्चाई क्लियर हो गई कि एक्चुअली ऑडिपस इज माय ओन सन एंड आई मैरिड। अब इसके सामने वो जो पहला पार्ट था प्रोफेसी का वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ था कि उसको इसके लुइस को ऑडिपस ने मारा या रॉबर्ट्स ने मारा, लेकिन उस पर भी थोड़ा कंफ्यूजन बाकी था। लेकिन इसको ये कंफर्म हो गया कि आई मैरिड टू माय ओन सन एंड ड्यू टू दैट रीजन शी वेंट टू हर रूम एंड शी हैंग्ड हरसेल्फ, उसने खुद को फांसी दे दी। एंड देन ऑडिपस एंटर्स। वहां अंदर जाने से पहले ऑडिपस के पास जो दूसरे लोग हैं जो कि इन्वेस्टिगेट करने गए थे जहाँ पर किंग लुइस मरा था, तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन और उनसे जब सारे सवाल जवाब हुए तो वहां पर एक चीज क्लियर हुई। यहाँ से ऑडिपस को ये पता लग गया कि ही इट वाज ऑडिपस हु एक्चुअली किल्ड किंग लुइस हु वाज हिज ओन बायोलॉजिकल फादर। सो यहाँ से उसको भी पता लग गया कि मैंने अपने फादर को खुद मारा था। देन ऑडिपस इंटरेस्ट कॉलिंग फॉर अ स्वॉर्ड। वो जब जहां पर उसने जोकास्टा ने खुद को हैंग कर दिया था उस रूम में गया एंड देन ही वाज कॉलिंग फॉर द स्वॉर्ड फ्रॉम हिज सर्वेंट्स कि मुझे स्वॉर्ड दे दो, बिकॉज ही वांटेड टू kill himself and wagging through the house until he comes upon Jocasta's body. In the final despair, Oedipus takes two long gold pins from her dress। अब यहाँ पर क्या करता है कि ऑडिपस ने जोकास्टा की जो बॉडी हैंग हो रही थी उसकी ड्रेस में से गोल्ड के दो पिन निकाले एंड देन ही टुक आउट बोथ ऑफ हिज आईज। उसके जो आईज थे ऑडिपस के, ही टुक देम आउट एंड ब्लाइंड हिमसेल्फ, उसने खुद को ब्लाइंड कर दिया ना। ब्लाइंड ऑडिपस बेग्स टू बी एक्साइल्ड एज सून एज पॉसिबल। अब उसका जो कैरोन ब्रदर इन लॉ था जो कि जोकास्टा का भाई था, उसको ये कहा
कि नाउ लुक आफ्टर दिस किंगडम, इस किंगडम को आप लुक आफ्टर करें। और चूंकि इसको 4 बच्चे थे, जो कास्टा और ऑडिपस के 4 बच्चे भी हुए थे ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज ये बहुत टाइम के बाद ये डेप्थ की जो किंग लुइस की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, इतना जल्दी नहीं हो रही थी। तो ही हैड 4 चिल्ड्रेन। तो इसने कहा कि आप इन 4 बच्चों का भी ख्याल रखिएगा, इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। एंड देन he also asked him to expel him or to take him to the jungle that he can suffer for the rest of his life। क्योंकि वो चाह रहा था कि मैं अब सफ़र करना चाहता हूँ, मैं सफरिंग से नहीं निकलना चाहता। जो मैंने अननोइंगली अनइंटेंशनली किया है, दैट इज नॉट फॉरगेटेबल, दैट इज नॉट forgivable, so that's why I need to suffer। and he after in the last scene, वो जो ऑडिपस है उसको जो उसका ब्रदर इन लॉ, ही टेक्स हिम टू द जंगल फॉर द सफरिंग। यहाँ बेटा ये बात क्लियर हो गई कि इसने खुद की आंखें निकाल दी एंड देन आस्क्ड कैरोन टू हिम टू द जंगल दैट ही कैन सफर। बट मोर इम्पोर्टेंटली इन बिटवीन यहाँ पर एक और सिचुएशन है जो कि मैंने यहाँ पर नहीं दी है, लेकिन अभी मुझे याद आई है जहन में कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैरोन हैज आस्क्ड ऑडिपस नॉट टू इन्वेस्टिगेट इन पब्लिक। क्योंकि ऑडिपस ने क्या करा था, एक वहां पर एक जो उनकी पूरी हॉल होता था, वहां पर पब्लिक बुलाकर वहां पर सारी लोगों के सामने इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। एंड बिकॉज ही वाज टू मच लॉयल विथ हिज पीपल एज वेल, के जो भी मर्डरर है, चाहे कोई भी है, मैं हूं या कोई और भी है, तो मेरी पब्लिक को पता होना चाहिए, और उसकी सजा मौत है, उसकी सजा सफरिंग है, उसकी सजा प्रॉब्लम्स है। तो और जैसे ही मर्डरर को सजा मिलेगी तो सिटी के ऊपर से कर्स भी हट जाएगी और सारी खुशहाली वापसी आ जाएगी। तो बट कैरोन ने उसको, ब्रदर इन लॉ ने बड़ा इंसिस्ट किया था कि आप बिहाइंड द डोर चलें, और जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस बंदे से भी आप सवाल पूछें, तो आप पर्सनल में पूछें, किसी और के सामने नहीं पूछें, ताकि लोगों को पता ना लगे। तो बट he refused that option and he all the investigation in the public। so that's why he asked in front of the public that take me to the jungle that I can suffer for the rest of my life। So beta, this is the summary of the play। I hope ke it has cleared the little bit point of view। prior understanding बताई थी मैंने, अब मैंने summary बता दी है कि summary के अंदर क्या हुआ है, how the summary took place and how the actions took place over here। more importantly बेटा, summary में हम सिर्फ और सिर्फ major events को discuss करते हैं, and you know very well that because you are the student of 6th semester। so now दूसरा सेशन आप ज्वाइन करें और बेटा, और उस सेशन में हम समरी के बारे में और भी थोड़ा बात करते हैं। ज्वाइन अगेन।